people succeeding and you are not? Why are other people growing in life and you are still at the same level? Hello and welcome to the show which says What's Your Plot by Mansi Malhotra. And in this video, only in 3 simple steps, we will be changing your mindset and your journey as a young entrepreneur. आप इन 3 simple steps को follow करेंगे तो I think आपकी entrepreneurial journey बहुत easy और simple हो जाएगी. Before telling the pointers, I would like to share my ओन जर्नी कि मैंने ये चीज कैसे सीखी एंड फिर उसके बाद उस एग्जाम्पल के बाद शायद आप लोगों को भी बहुत इजीली समझ आ जाए कि हाँ अगर आप वो गलती कर रहे हो सो इट कैन बी इजीली इम्प्रूव जस्ट ट्रस्टिंग अदर पीपल एंड योर ओन सेल्फ. सो दिस इज माई ओन पर्सनल स्टोरी. मैं कोई भी काम करती थी, इफ इट वॉज अ स्मॉल टास्क और अ बिग टास्क, आई ऑलवेज यूज टू प्रूफ रीड इट. मैं कभी भी ट्रस्ट अपने एम्प्लॉइज पे नहीं करती थी कि ठीक है अगर उन्होंने प्रूफ रीड कर दिया so it is okay and we can directly show it to the client or maybe upload it on social media if it was a video. So for me, it was actually taking a lot of time and over the time period, it kind of became a burden because पहले मैं shoot करती थी, फिर उसके बाद edit में time invest करती थी and after investing the time and discussing with my editor, I used to still see the final results. Rather than trusting my employees, rather than trusting my team, I used to still invest more time on the final edit. And once the edit was being done, still I used to watch the same video before the upload. इससे मेरा time waste हो रहा था and my employees were also not maturing because उनको लगता था कि मैम पहले देखेगी तभी वीडियो अपलोड होनी है. So they were not really concentrating on the final result. They were just doing their task and not seeing the video as a detailed video. As a team, they were not maturing. So as the owner or maybe the founder, my job was actually taking a lot of time. I was not able to invest my own time in other aspects where I wanted to invest time how I can grow my business. So for all the entrepreneurs, all the people who are working under somebody as a team, try to trust your team. इससे आपका भी काम easy होगा. Also, the people who are working under you, they will also get matured in their work, how to take decisions, how to have a solution approach. They should not always come to you and ask, is it right or wrong? They should use their own brain. They should have the own decision-making habit and resolve the problem on the spot. आपका काम भी इससे easy होगा और आपका काम जल्दी होगा. So let's get back to the 3 simple pointers which can actually make your life easy and maybe profitable as well. Profitable not just in terms of money but time, because time is more expensive than money. पैसा फिर भी हम कमा लेते हैं, time नहीं कमा पाएंगे. Time is very important and make sure that you utilize it the best way possible. So the first major pointer is delegate work. अपने काम को बांटना सीखो. अगर आप अपने काम को बांटोगे नहीं, so you are not even nurturing your team. You're not even making your team more progressive. You're just burdening your own self by doing the micromanagement, not the macro management. You being the boss, you being the decision maker, you should learn to do the macro management. जब आप ऊपर से मैक्रो मैनेजमेंट देखोगे ना, अपने टास्क और अच्छे से कर पाओगे और जल्दी कर पाओगे. It will eventually gain lot of profits to you plus the time as well because आप अपना टाइम और चीजों में इन्वेस्ट कर पाओगे. And let your team take the decision, the small decisions, the micro management, let your team do it. I'm not saying you should not enter into the micromanagement. Once a month, you should definitely sit with your team and do the micromanagement. But overall, अगर आपको अपनी लाइफ में पैसा कमाना है, अगर आपको सक्सेसफुल होना है, then you need to delegate work to the team. उनको भी सिखाओ और खुद को भी सिखाओ. जो आपको नहीं आता उस चीज पे काम करो. Invest your time where your decisions are important. Invest your time where you can actually double up your money and let your team handle the other management skills. Let your team handle other works which can be done without you. So the first pointer is delegate work. आपके साथ साथ वो भी mature होंगे और वो भी सीखेंगे and eventually without you being getting
feeling burdened. The second pointer is trust. Trust is really important and also a major factor if you are running a firm. हमें अपना trust अपनी टीम पे रखना ही है. Don't think that they will steal your creativity, they will steal your ideas, they will steal what you have made them learn, or maybe the finances as well. जब तक वो आपके साथ हैं, at least आपका काम easy हो रहा है तो आपको उन पे ट्रस्ट करना ही पड़ेगा. जब तक आप उन पे ट्रस्ट नहीं करोगे, they will also not be able to perform that 100% level. उनको भी वो बहुत caged लगेगा. अगर आप कोई एक क्रिएटिव फील्ड से हो और आप बार बार उनको पोक करते हो उनकी क्रिएटिविटी पे, then they will always feel that, you know, being the owner doesn't trust the team member, and eventually you as the owner will never be able to get the 100% creativity as you require. So you as an owner, you really need to trust your team. चाहे वो क्रिएटिविटी पे हो, चाहे वो फाइनेंसेस पे हो, चाहे वो स्किल पे हो. अगर आपने अपनी टीम को कोई स्किल सिखाया है, जितने टाइम के लिए आपके पास वो एम्प्लॉय है, ट्रस्ट द एम्प्लॉय एज मच एज यू कैन. जितना आप उनको फ्री छोड़ोगे, जितना आप उन पे ट्रस्ट करोगे ना, यू विल नेवर गो रॉन्ग. यू विल ऑलवेज बी इन अ पॉजिटिव साइड. द एम्प्लॉयर विल थिंक, यस, माय बॉस रियली ट्रस्ट मी एंड आई हैव टू प्रूव माय बॉस. अगर आप उसके लिए पॉजिटिव थॉट प्रोसेस रखोगे तो उसकी तरफ से भी आपके लिए पॉजिटिव थॉट प्रोसेस आएगा. ही और शी विल ऑल्सो गिव 100% to that skill, to that work, whichever is dedicated to them. So really blindly trust your employees. Sometimes I also used to feel कि यार नहीं, मेरे पैसे चोरी हो जाएंगे या मेरा स्किल चोरी हो जाएगा या फिर मेरे को उतना क्रिएटिविटी नहीं मिल रहा है जितना मैं चाहती हूँ. But since the time when I started trusting my team, I was actually getting better results, and that I really learned with a long process of time. But now when I've learned, I'm very, very relieved. Plus my time is being invested in other tasks. My time is being invested in other areas of life rather than this one area where I was being stuck, where I was doing the micromanagement. So जो भी आप करें, please trust your employees, and I am 110% sure that they will give their 1000% to prove you that yes, they are capable, yes, they are trustworthy. Just have a positive and a trustworthy mindset towards your team. The third and the last pointer is patience is the power. If you will not show patience within any kind of work or towards your team, eventually everything will go down. Because impatience से कभी भी किसी का भी benefit नहीं हुआ है. हम कितनी बार अपना एक hard work एक project में लगाते हैं and we expect a positive result out of it. But that positive result is taking a lot of time, which loses our patience. So it is your mindset who has to be the stronger amongst all, because you need to calm your own self plus the team as well. आपको टीम को भी काम रखना है और अपने आप को भी काम रखना है. आप सबका एफर्ट लगा है उस पे. अगर आप अपना पेशेंस लूज कर दोगे, सो इवेंचुअली योर टीम विल ऑल्सो लूज द पेशेंस, और जो शायद पॉजिटिव रिजल्ट आना था वो अब बिल्कुल भी नहीं आएगा. बिकॉज यू हैव लॉस्ट पेशेंस इन योर ओन सेल्फ, बिकॉज यू हैव लॉस्ट ट्रस्ट इन योर ओन सेल्फ. सो बीइंग अ सीईओ, द ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट इज यू हैव टू हैव दैट स्ट्रॉन्ग माइंडसेट कि आप अपने साथ अपनी टीम को भी काम डाउन कर सको, अपनी टीम को भी सिखा सको कि पेशेंस कितना इंपॉर्टेंट है. एंड पेशेंस इज एक्चुअली द पावर इन एनी काइंड ऑफ क्रिएटिविटी, फाइनेंस और स्टॉक मार्केट. अगर आप किसी भी फील्ड में हैं या फिर अगर आप हाउसवाइफ भी हैं, वी ऑल नो दैट पेशेंस प्लेज अ वेरी बिग रोल इन एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, इन एनी प्रोफेशनल वर्क, और इट्स जस्ट फॉर योर ओन सेल्फ एज वेल, फॉर योर ओन ग्रोथ एज वेल. सो प्लीज वर्क ऑन ऑल दीज 3 pointers which can actually change your mindset as a real change. We all need to have a macro approach towards our professional and personal life. ये 3 pointers आप अपने personal life पे भी apply करिए और professional life पे भी apply करिए. It will make your life very easy, and in no time you will actually succeed. Thank you so much. I will see you in my next video.